सो हेल्थ एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन, इसको एक अदर वर्ड्स में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी बोला जाता है, या ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सिंपली अगर कहें तो बेहतर होगा। अगर आप नेट पे सर्च करोगे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, तो आपको हो सकता है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, या हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। सो हेल्थ एंड व्हाट इज़ एक्चुअली हेल्थ एंड सेफ्टी फर्स्ट। सो हेल्थ एंड सेफ्टी में जो मेजर डिफरेंस है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, सेफ्टी इज टोटल रिलेटेड टू योर फिजिकल ऑर्गन्स, फिजिकल बॉडी, damage to your physical body, hazard to your physical body, hazard to your physical organs or physical appearance। जो आपके बॉडी में कोई भी डैमेज आ जाए, बॉडी में कोई भी हैजर्ड आ जाए, कोई भी नुकसान आ जाए, दैट इज रिलेटेड टू योर सेफ्टी। ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर कोई चीज़ आपके सर के ऊपर गिरने का खतरा है और आपने कोई भी हेट वगैरह पहना नहीं हुआ, तो दैट इज रिलेटेड टू योर सेफ्टी। जो इंटरनल ऑर्गन्स को जो भी डैमेज, सॉरी एक्सटर्नल ऑर्गन्स को जो भी डैमेज करे, जो भी हैजर्ड डैमेज करे, जो भी खदशात या खतरनाक हादसात हों जो आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस को डैमेज करें, दैट आर रिलेटेड टू योर सेफ्टी। उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ इज टोटली रिलेटेड टू योर इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल फीलिंग्स, इंटरनल कंडीशंस, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, ईटीसी। टोटली रिलेटेड टू योर इंटरनल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, आप बीमार पड़ जाते हो, आपकी दिमाग की हालत ख़राब हो जाता है किसी भी चीज़ की वजह से, तो दीज आर रिलेटेड टू योर हेल्थ। सो ये किस चीज़ की वजह से हो सकते हैं? हो सकता है डस्ट की वजह से हो सकता है नॉइज़ की वजह से हो सकता है किसी टाइप ऑफ पॉल्यूशन की वजह से हो, कि किसी के केमिकल, कोई भी केमिकल है वहाँ पर, उसके साथ आपने इंटरेक्शन किया, वो आपने इनहेल कर लिया, तो इनहेल करने के बाद अगर आपके पास आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुँच गया, so that will be also harmful. Health is related to your internal organs, internal feelings, internal condition. अगर is there any damage to your internal organs, that will be related to your health. Safety is totally related to your physical condition, and health is totally related to your internal organs, mental conditions। कोई भी केमिकल इनहेल कर जाते हो तो वो आपके हेल्थ में आ जाएगा। अच्छा, कोई भी केमिकल है वो आपके हाथों पे लग जाता है, पाँव पे लग जाता है, आपके चेहरे पे लग जाता है, उसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचता है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर सेफ्टी। बट कोई भी केमिकल है जो आप इनहेल कर जाते हो और आपके कंडीशन को बेड कर देता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, आपको अनकॉन्शियस कर देता है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ। ठीक है, ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन द हेल्थ एंड सेफ्टी। सेफ्टी फिजिकल, हेल्थ इंटरनल। सो हेल्थ एंड सेफ्टी को हमें बरकरार रखने के लिए हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। वी हैव टू वियर ऑल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीईज। पीपीई के बारे में भी मैंने इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स में जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पीपीईज क्या होते हैं। पीपीईज आर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, द सेफ्टी goggles or safety measures which we wear on our body that are called as personal protective equipments। यहाँ पर एक फिगर गिवन है, यहाँ पर जो आपके सामने एक फिगर है जिसमें एक बॉय है जिसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियरिंग्स पहने हुए हैं, जिसमें दी हार्ड हेट है, सेफ्टी ग्लासेस हैं, ग्लव्स हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, एंड दी प्रोटेक्टिव बूट्स हैं, दी रोड जोन है, रोड कौन है। तो रोड कौन हो सकता है अगर आप कहीं पर रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर लाजमी आपको इसको रखना पड़ता है। सो दीज ऑल the parameters, or these all the anything you want to say, that is these all are the personal protective equipments. We can call them personal protective equipments, anything which is protecting from the hazard, protecting from the any accident, that will be called as personal protective equipment. The role of personal protective equipment in health and safety of you, and health and safety in construction is very much important, and you have to, anyhow you have to wear the personal protective equipment when you are on the construction side, when you are working on the construction side। ओके, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, यहाँ पर देखें।
if you are not safety conscious you could end up unconscious. अगर आप safety conscious नहीं हो, अगर आप safety प्रोविजंस नहीं लेते हो, अगर आप पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स नहीं लेते हो, पहनते नहीं हो, तो हो सकता है एंड रिजल्ट आपका यही हो कि आप कहीं पर पड़े होंगे, कहीं पर या तो बीमार पड़े होंगे या तो बेहोश पड़े होंगे. यू कैन एंड अप अनकॉन्शियस. सो थिंक अबाउट इट. You have to wear personal protective equipments when you are working on any construction site or any where any place where there are chances of risk, there are chances of hazard, there are chances of any harmful activities. So you have to wear the personal protective equipments for maintaining your health and safety in construction or health and safety of yourself. ठीक है. So today we will learn about what is actually the health and safety. I gave you a little bit introduction about that health and safety. Then why it is so important, who is responsible for the health and safety, maintenance of health and safety, what is the cost of health and safety, and how to improve current situation of our industry. Current situation of industry, as you know, in Pakistan we the most of the people are not following the personal protective equipments. Even in the labs we are not following the personal protective equipment or the safety health and safety equipment matters. Okay, let us start from what is actually the health and safety. अच्छा, इसको पढ़ते हैं थोड़ा. वो कॉन्सेप्ट तो हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी होता क्या है. सो सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ एक्चुअली. अगर आप सेफ हो, चलो सिंपल है, इसको साइड में करते हैं. द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट. अच्छा, सेफ्टी इज एक्चुअली अ कंडीशन. सेफ, बीइंग अ सेफ इज एक्चुअली अ कंडीशन. If you are safe means you are in a good condition. If you are not safe meaning you will be and in a any in a being a bad condition. अगर आप safe हो तो good condition में हो, अगर safe नहीं हो तो आपका end result ऐसे समझो bad condition ही होगा. So this safety is actually a condition. कंडीशन क्या है, किस चीज़ का कंडीशन है? द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ हैजर्ड. सिंपल वर्ड्स में अगर आपको आपसे कोई पूछे कि भाई सेफ्टी को डिफाइन करो अपने वर्ड्स में, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि भाई इट इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ हैजर्ड, दैट इज कॉल्ड एज सेफ्टी. ठीक है. सो कंडीशन वर्ड, जब भी सेफ्टी वर्ड को एक्सप्लेन करो तो वहाँ पर कंडीशन वर्ड आपके आपके माइंड में आना चाहिए. तो फिर आप इजीली अपने इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, इसको पढ़ते हैं. द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल, साइकोलॉजिकल, educational or other types of consequences or failure, consequences of failure, damage, error, accident, harm, or any other event which could be considered non-desirable, that is called the safety. ये जो एक डेफिनेशन है, दैट इज ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी. The safety related to the construction, safety related to on any other side, safety related to the chemical industry, safety related to the, your educational institute, safety related to the other type of work areas. हर work areas का एक common definition यहाँ पर given है. सो इसको अगर कॉमन डेफिनेशन के तौर पे याद कर रहे हो फिर भी सही है. अगर आप सिंपली ये बोलते हो कि कंडीशन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग safe or it is the condition of being protected against any type of the failure, any type of damage, any type of accident, harm, or any other event which could be considered non-desirable will be called as the safe. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली. ओके, safety is clear to you now. Moving towards the next slide, that is also related to the safety. This can take the form of being protected from the event. कोई भी event हो, कोई भी हादसा हो, कोई भी काम हो, or from the exposure to something that causes health or economical losses. It can include the protection of people from the protection of people or possessions. That is totally related to the protection from any type of event, any type of exposures that is related to maybe that is any chemical industry,
when there is a exposure of chemicals that will harm you, that will harm you, your health, and also the safety. Okay, instead, when you hear the word safety, think of it as a word that applies to the way you do everything in life. सेफ्टी को लाजमी है आप देखें ना, चलते फिरते भी आप अपने सेफ्टी को माइंड में रखते हो कि चल रहे होते हो वहाँ पर अगर कोई भी आपके सामने सामने हिड्रेंस आ जाता है तो हिड्रेंस को अच्छे तरीके से क्लियर करके उसके बाद फिर जाते हो, या ख्याल करते हो कि कहीं पर मेरे पाँव में ना चोट आ जाए या मेरे हाथ में ना लग जाए, या इस तरीके से हर चीज़ को ध्यान रख के फिर आगे चलते हो। सो सेफ्टी, द वर्ड सेफ्टी इज अप्लाइड इन योर लाइफ एवरी टाइम। हर टाइम आप कोई भी आप काम करते हो उसमें सेफ्टी अप्लाई होता है। फ्रॉम थिंक ऑफ इट एज अ प्रोसीजर टू कीप यू अवे फ्रॉम द हार्म। ये एक प्रोसीजर है जो आपको किसी भी नुकसान से बचाता है या किसी भी नुकसान से दूर रखता है। सिंपली अगर इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहोगे तो ये हो जाएगा, थिंक ऑफ इट एज ए प्रोसीजर टू कीप यू अवे फ्रॉम द हार्म। The word safety refers to your freedom from danger, injury and damage, and to your personal security. ये भी सेम चीज़ है कि सेफ्टी जो होता है that is the freedom from your, if you are doing the proper safety ways uh, that will make you free from the danger, injury or any type of other damage. Okay, the word safety has been used so often that many of you think of it as a the preaching word. हर कोई आपको देखना हर टाइम आप अपने आप को भी बोलते रहते हो कि मुझे सेफ रहना है, या हर चीज़ के लिए सेफ का वर्ड अगर आप यूज़ करो ना करो, लेकिन आपके माइंड में ये हमेशा रहता है कि मुझे सेफ रहना है, मुझे कोई नुकसान ना हो, मेरे पाँव में चोट ना लगे या मुझे कोई भी नुकसान ना पहुँचे। सो ये is that is a type of preaching word actually, or a word that forces you to alert your ways or change bad habits। या ये वो टाइप वो या जो आपको development actually the health and safety in construction, it is a safe condition of acting and conducting any construction activity। ये इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट मैच लेते हो तो आप किसी भी एक्टिविटी को सेफ बना सकते हो, वहाँ पर किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को सेफ बना सकते हो, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को। इट assures that every worker will return their home safely। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट मैच लेते हो तो आप इस बात को यकीनी बनाते हो कि यू द वर्कर्स विल रिटर्न देयर होम सेफली। अच्छा, इसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट मेयर्स को कुछ आप खुद ऐड कर लेना। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आप खुद ही ऐड कर लेना, ऐसा ना हो कि मैं आपको पेपर में importance of the first term is the accident। an accident, so accident को अगर ऑफिशियल वे में बोलें कि ऑफिशियली an accident is an incident plus its consequences। ये एक इंसिडेंट है प्लस इंसिडेंट जिसके उसको कहेंगे हम एक्सीडेंट। कोई भी इंसिडेंट, कोई भी हादसा हो, उसके consequences दैट इंसिडेंट विल बी कॉल्ड एज एक्सीडेंट। कोई भी पूछे व्हाट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट can be defined as an incident plus its consequences simply, that is will be called as accident। इसको फर्दर है, एक्सटेंशन है कि the end product of a sequence of actions resulting in an undesirable consequences। वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या वो सीक्वेंसेस किसी भी काम के सीक्वेंसेस टू यू
No, I'm playing this particular video. Let me mute this. Okay, now it is being played. So construction site rules. Do not start work without your induction. अगर आप को जॉब नहीं मिल रही है वहाँ पर, तो आप ऐसा नहीं कि बाहर से आके वहाँ पर जॉब कर लो या शुरू हो जाओ. डू नॉट डू वियर योर पीपीईज. पीपीईज मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. आपको सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने पड़ेंगे. तो देखें यहाँ पर इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उसको नहीं है. डू कीप टाइडी मीन्स क्लीन होने चाहिए. आपका कंस्ट्रक्शन एरिया साफ सुथरा होना चाहिए. डू नॉट पुट योर सेल्फ और अदर्स एट ए रिस्क. कोई भी ऐसा काम ना करो जो आपको और आपके फेलोज को रिस्क में डाले. जैसे ये देखें, जल्दी जल्दी में जा रहा था, उसने देखा ही नहीं. डू फॉलो सेफ्टी साइंस एंड प्रोसीजर्स. जो भी सेफ्टी साइंस एंड प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किए जाए. डू नॉट वर्क इन अनसेफ एरियाज. जो अनसेफ एरिया हैं उनमें काम ना करें तो बेहतर है. डू रिपोर्ट डिफेक्ट्स एंड नियर मिसेस. कोई भी मसला है तो उसको रिपोर्ट करें. डू नॉट टेम्पर विथ इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट अगर ख़राब है तो उस पर गुस्सा ना करें. ऐसे ना हो कि एंड रिजल्ट में आपको अपने खुद को भी नुकसान पहुंचाओगे, इक्विपमेंट को भी. डू यूज़ 110. चलो इस खुद समझ लोगे. अगर ऐसा कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन लेने चाहिए. डू आस्क फॉर हेल्प. कभी कोई मसला है तो आप हेल्प के लिए लाजमी कॉल करो. Okay, this was the video. There is another video, let me play that for you. That is not opened. Let me open that video. Do you know that 90% of accidents are caused by unsafe acts. कोई भी unsafe act करते हो तो उसमें 90% of accident उससे cause होते हैं. ये दोनों वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगा. Implementing safety procedures can help prevent such accidents. Let's go on site and see. So many accidents can happen when you are working on site. Any type of accident, these types of accident can occur when you are working on site. So for avoiding the accidents, you have to follow all type of personal protective equipment. So think safety and act safely. So you have to wear all type of safety gears like personal protective equipments. These are hard hat, safety vest, gloves, shoes, hard shoes. You have to wear the. Acha, these are the some warning signs, prohibition signs. Now let's talk about another common health hazard. Health hazard से related. This is an health hazard. कोई भी आप overloading का काम कर लो, that will affect your health. So इसलिए इन्होंने ट्रेलीज इन्वेंट की है. So safety is very much important on a construction site or anywhere. Think safety and act safely. ठीक है, ये वीडियो coming towards the basic terms used in the safety. एक्सीडेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एक्सीडेंट is an incident plus its consequences. The end of product of a sequences of events or actions resulting
in and undesirable consequences. That undesirable consequences can be injuries, property damages, interruption or delay in construction, etc. An accident can be defined more formally as an undesirable event which result in physical harm or property damage. अगर आप इसको अनफॉर्मली डिफाइन करना चाह रहे हो, तो फॉर्मली आपके पास में आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए जब आप एक्सीडेंट को डिफाइन करो कि अनडिजायरेबल इवेंट. द accident is an undesirable event which result in physical harm or any type of harm to your body. That is called as accident. कोई भी undesirable event, unavoidable event जो आपके बॉडी को डैमेज करे, आपको हार्म करे, दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सीडेंट. एक्सीडेंट को जब भी डिफाइन करो तो आपके माइंड में अनडिजायरेबल इवेंट आना चाहिए. जैसे सेफ्टी के लिए द कंडीशन, इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशन. ओके, पढ़ते हैं इसको. एन एक्सीडेंट कैन बी डिफाइंड मोर फॉर्मली एज एन अनडिजायरेबल इवेंट व्हिच रिजल्ट्स इन फिजिकल हार्म और प्रॉपर्टी damage, usually resulting from contact with a source of energy above the ability of the body or structure to withstand it. खास तौर पे वहाँ पर ये होता है जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके बॉडी के एबिलिटी या विथ स्टैंडिंग पावर से ज़्यादा हो. कोई भी फॉर एग्जांपल लाइट है, लाइट आपके बॉडी के जो एनर्जी है उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो वहाँ पर अगर आप काम करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है. या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप विथ स्टैंड नहीं कर सकते हो, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, अगर वो आपके सर पर आके गिरे या इस टाइप ऑफ कोई भी चीज़. So that usually resulting from a contact with the type of source of energy above the ability of your body and or the structure to within the withstand it. So that was related some of the introduction about the accident. Accident को simply undesirable event आप याद रख लेना, तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, उसके बाद है इंजरी एंड हैजर्ड. एन इंजरी इज दस अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इंसिडेंट बट नॉट द ओनली पॉसिबल वन. इंजरी इंजरी हमेशा किसी भी इंसिडेंट का जो एंड रिजल्ट है वो होता है. कोई भी हादसा हो गया, कोई भी इंसिडेंट हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपको इंजरी हो सकती है. सो इंजरी इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इंसिडेंट बट नॉट द ओनली पॉसिबल वन. उस इंसिडेंट की वजह से आपको इंजरी नहीं हो सकती, किसी भी और चीज़ की वजह से इंजरी हो सकती है, किसी भी चीज़ की वजह से. इट हैज़ बीन शोन दैट हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स occur in the construction industry for every one that causes injury or loss. कितने ही टाइप ऑफ इंसिडेंट अकर होते हैं जिसमें या तो आपको इंजरी होती है या तो कोई ना कोई नुकसान होता है. सो इंजरी इज सिंपली अ कॉन्सिक्वेंसेस आर एंड रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट और एक्सीडेंट. ओके, हैजर्ड क्या है? हैजर्ड भी इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो हैजर्ड कोई भी नुकसानदेह चीज़. हैजर्ड का मतलब होता है कोई भी नुकसानदेह चीज़. सो हैजर्ड मीन्स द इनहेरेंट प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ समथिंग टू cause harm. Ability of something to cause harm or the property of something to cause harm, that is called as the hazard. Anything which harms you, that will be called hazard. So hazard means the inherent property or ability of something to cause harm. आगे पढ़ते हैं इसको. The potential to interrupt or interfere with a process or person. अच्छा, ये सेंटेंस उससे कनेक्टेड है. Hazards may arise from interacting or influencing components. For example, two chemical interacting to produce a third. Hazard किस तरीके से जनरेट हो सकता है? किसी भी तरीके से जनरेट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, कोई भी एक केमिकल है, दो केमिकल हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करवा रहे हो उनको या मिक्स कर रहे हो, उससे अगर कोई भी इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है, दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज हैजर्ड. वो नुकसान है. ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना. अच्छा, रिस्क के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं. रिस्क इज द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एंड एवोल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल फॉर फेलियर. इट इज easy to confuse the term hazard and risk, but a simple way to remember the difference is that hazard describes potential to harm and risk is the likelihood that harm will result in particular situation. अच्छा, हार्म और रिस्क में सिंपल ये फ़र्क हो सकता है कि हार्म
इस कोई नुकसान है जो आपको हो जाए, दैट इज रिलेटेड टू हार्म, बट रिस्क इज उस जो हार्म है उसकी लाइकलीहुड या उसके अकरेंस को हम सिंपली रिस्क बोल सकते हैं। इन एनी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस coupled with a measure of a degree of severity of that harm। इसको आप देख लेना, रिस्क और हार्म को। रिस्क में हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो इसलिए इसको मैंने इस स्लाइड को छोड़ दिया है आपके ऊपर। Okay, who is responsible for health and safety? Anyone who is related to the construction side, who is indirectly or directly related to the construction side, the person will be responsible for the health and safety. Either that is employer or contractor, either that is design consultant, the main contractor or subcontractor। जो भी बंदे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व हैं, वो प्लानिंग से लेकर इवन कंस्ट्रक्शन तक, तो वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे उस हेल्थ एंड सेफ्टी के। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे दी responsibilities of every person, responsibility of employer or contractor, responsibility of design consultant, responsibility of main contractor, the subcontractor, etc। अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसमें? एम्प्लॉयर और सिंपली इसको कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट या अच्छा, इसको या तो कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हो या तो क्लाइंट बोल सकते हो। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है। एम्प्लॉयर्स, okay, employer is main stakeholder of any construction project। employer is financing and he can be heard easily। वो बंदा होता है जो आपको फाइनेंस कर रहा होता है, और वो बंदा अगर किसी से काम लेना चाहे तो उसकी हर कोई मानता है। employer should ask health and safety practices during bid phase। कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए कि बिड ड्यूरिंग बिड फेज उसको हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट मेयर्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। एम्प्लॉयर मस्ट इंक्लूड स्पेशल क्लास अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अगर बनाते हो कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करने से एक क्लास स्पेशल क्लास होना चाहिए जो जो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हो, और होता है हर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में एक क्लास होता है, एक पोर्शन होता है जिसमें हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। डिज़ाइन कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये देखें, जो मैं आपको अभी इसको रीड कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स हैं, सिंपल जो सेंटेंसेस हैं, तो इसमें कोई भी एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है। अगर कोई भी एक्सप्लेन करने की चीज़ होगी तो मैं आपको खुद उसको एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो सिंपली ऐसे समझो कि रीड ही करना है मुझे। ओके, डिज़ाइन कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिज़ाइन शुड बी द डिज़ाइनर शुड डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली सेफ। ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जो सेफ होना चाहिए। डिज़ाइनर मस्ट फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजीज। कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करे, उसके हिसाब से डिज़ाइन करे ताकि डिज़ाइन सेफ हो। डिज़ाइनर मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन पोटेंशियल डिज़ाइनर मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन पोटेंशियल हैज़र्ड। अच्छा, ये दैट इज़ रिलेटेड टू द टाइप ऑफ डिज़ाइनर। देखिए ना, कोई ऐसे डिज़ाइनर होते हैं जो बिल्कुल सेफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, या दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू सेफ्टी किसी भी तरीके से। डिज़ाइनर शुड अवॉइड अ डिज़ाइन व्हिच सीम्स इम्प्रैक्टिकल टू अचीव। कोई ऐसा डिज़ाइन है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो, फिर भी उसको डिज़ाइन कर रहे हो, तो ये गलत है। वो इनडायरेक्टली आपके हेल्थ एंड सेफ्टी पे या किसी भी एक्सीडेंट को एंड रिजल्ट उसका एक्सीडेंट ही हो सकता है। अगर कोई डिज़ाइन है वो आप अचीव नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपली बोल दो कि भाई हम ये नहीं कर सकते, और सिंपली से नो टू दैट पर्टिकुलर client or any organization which is asking you for the design। मेन कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? मेन कॉन्ट्रैक्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी काम कर रहे हैं बंदे, उनके सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मेन कॉन्ट्रैक्टर शुड हायर अ सेफ्टी इंजीनियर। वहाँ पर सेफ्टी इंजीनियर को हायर करना चाहिए जो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी मेयर्स हैं उसको देखे। मेन कॉन्ट्रैक्टर, अब आजकल ऐसा नहीं होता है, सेफ्टी इंजीनियर को कोई भी हायर नहीं करता है, इसके पैसे बचा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, मेन कॉन्ट्रैक्टर शुड ट्रेन ट्रेन
दी स्टाफ और सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, कोई भी वर्किंग एरिया होता है तो वहाँ पे सबसे पहले जो इक्विपमेंट स्टूडेंट्स हैं या सॉरी वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। मेन कॉन्ट्रैक्टर शुड स्पेंड मनी ऑन पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे थोड़ा मनी उसको स्पेंड करना चाहिए। मेन कॉन्ट्रैक्टर शुड बी एबल टू असाइन वर्क टू अ ट्रेंड वर्कर टू दैट स्पेसिफाइड जॉब, उनको काम देना चाहिए इसको जो जिसको पहले उस वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड ऑन साइट लाइक एमआई रूम, नर्स और एम्बुलेंस टाइम, कोई भी इमरजेंसी है तो उस हिसाब से मेडिकल रूम होना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी रूम, एमआई रूम इज़ एक्चुअली मेडिकल इमरजेंसी रूम। दी नर्स एंड एम्बुलेंस हर टाइप ऑफ, अगर कंस्ट्रक्शन साइट ज़्यादा बड़ा है, जैसे देखिए ना ये बैरियर टाउन वालों की कंस्ट्रक्शन साइट बहुत बड़े हैं, तो वहाँ पर इनको लाजमी बिठाना चाहिए जिसमें मेडिकल इमरजेंसी रूम होना चाहिए, वहाँ पर एक नर्स होना चाहिए और एम्बुलेंस वगैरह भी होना चाहिए और होगा वहाँ पर। ये जो बड़े 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 कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें लाजमी, वो ऐसी फैसिलिटी लाजमी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बैरियर टाउन कराची है, बैरियर टाउन नवाबशाह है या डीएचए वालों का है, तो वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ लाजमी होंगी। Okay, continue with the main contractor's responsibility, that main contractor should prepare policy for health and safety. Okay, main contractor should do job safety analysis. बिल्कुल safety analysis के हिसाब से भी उसको देखना चाहिए। मेन कॉन्ट्रैक्टर मस्ट रिपोर्ट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए मेन कॉन्ट्रैक्टर को। मेन कॉन्ट्रैक्टर शुड अवॉइड अनट्रेंड वर्कर और प्रोवाइड बेसिक ट्रेनिंग टू टेम, जो अनट्रेंड वर्कर हैं उनको हायर नहीं करना चाहिए या उनको अगर हायर कर रहा है तो उसको पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, एक्चुअली अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं कर रहे हो तो उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर शुड, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर एंड रिजल्ट क्या हो सकता है या कितने पैसे उसको खर्च करने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट को, देखते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्टर शुड स्पेंड some money on personal protective equipment and safety training for their workers because the life is priceless and we will not be able to buy it again। इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ अमाउंट होना चाहिए, स्पेशल क्लास होना चाहिए जिसमें कुछ अमाउंट हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उस कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए कि भाई तुम हेल्थ एंड सेफ्टी को बरकरार रखोगे। एंड करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव द करंट सिचुएशन ऑफ आवर इंडस्ट्री, वी हैव टू अवेयर provide awareness of health and safety in construction to the every worker who are working on the construction site, to the clients, to the contractor, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बंदे हैं उन सबको अवेयरनेस देना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी से। लेकिन ओशा या